ॐ श्रीजालपादेव्यै नमः। अथ वैकृतिकं रहस्यम्। ऋषिरुवाच ॐ त्रिगुणातामसी देवी सात्विकी या त्रिदोदिता सा सर्वा चण्डिका दुर्गा भद्रा भगवतीर्यते योगनिद्रारेरुक्ता महाकाली तमो गुणा मधुकैटवनाशार्थं यं तुष्टा बम्बुजासन दशवक्त्र दशभुजा दशपादाञ्जन प्रभा विशालया राजमाना त्रिंशल्लोचनमालया स्फुरद्दशनद्रष्टा सा भीमरूपापि भूमिव रूपसौभाग्यकान्तीनां सा प्रतिष्ठा महाश्रिय खड्गबाणगदाशूलचक्रशङ्खभुषुण्डवृत् परिकं कार्मुकं शेषं निश्चोतद्रुधिरं ददौ एषा सा वैष्णवी माया महाकाली दुरत्यया आराधितवशीकुर्यात् पूजा कर्तुश्चराचरं सर्वदेव शरीरेभ्यो याभिर्भूतामितप्रभा त्रिगुणाशमालक्ष्मी साक्षान्मयी समर्दिनी श्वेतानननीलभुजा सुश्वेतस्तनमण्डला रक्तमध्यरक्तपादा नीलजङ्घोरुन्मदा सुचित्रजगना चित्रमाल्यम्बरविभूषणा चित्रानुलेपना कान्तिरूपसौभाग्यशालिनी अष्टादशभुजा पूज्या सा सहस्रभुजा सती आयुधानत्र वक्ष्यन्ते दक्षिणादकरक्रमात् अक्षमाला च कमलं बाणोषि कुलिशं गदा चक्रं त्रिशूलं परशु शङ्खघण्टा च पाशग शक्तिर्दण्डस्तर्म च पानपात्रं कमण्डलु अलङ्कृतभुजामेभिरायुधै कमलासनं सर्वदेवमयीमीशां महालक्ष्मीमिमां देव पूजये सर्वलोकानां सदैवानं प्रभुर्भवेत् गौरीदेया समभूता या सत्त्वैकगुणाश्रया साक्षात् सरस्वती प्रोक्ता शुम्भासुरनिवारिणी ददौ चाष्टभुजा बाणमुसले शूलचक्रवेत् शङ्खं गण्डलाङ्गलं च कार्मुकं वसुधाद्दिव एषा सम्पूजिता भक्त्या सर्वज्ञत्वं प्रयच्छति निशुम्भमतिनी देवी शुम्भासुरनिवारिणी इत्युक्तानि स्वरूपाणि मूर्तीनां तव पार्थिव उपासनं जगन्मातु पृथगासं निशामय महालक्ष्मीरा पूज्या महाकाली सरस्वती दक्षिणोत्तरयो पूज्ये पृष्ठतो मिथुनत्रयं विरञ्चीश्वरया मध्ये रुद्रो गौर्या च दक्षिणे वामे लक्ष्मीऋषिकेश पुरतो देवतात्रयम् अष्टादशभुजा मध्ये वामे चास्यदशानना दक्षिणेष्टभुजा लक्ष्मीर्मवतीति समर्चयेत् अष्टादशभुजा चैषा यदा पूज्या नरादेव दशानन चटभुजा दक्षिणोत्तरयोस्तदा कालमृत्यु च सम्पूज्यौ सर्वारिष्टप्रशान्तये यदा चाष्टभुजा पूज्या शुम्भासुरनिवारिणी नवास्या शक्तयो पूज्या तदा रुद्रविनायकौ नमोऽद्यप्य इति स्तोत्रे महालक्ष्मीं समर्पयेत् अवतारत्रयार्चायं स्तोत्रमन्त्रः तदाश्रया अष्टादशभुजा चैषा पूज्या महिषमर्दिनी महालक्ष्मी महाकाली शैव प्रोक्ता सरस्वती ईश्वरी पुण्यपापानं सर्वलोकमहेश्वरी मोहि शान्तकरी येन पूजिता स जगत्प्रभु पूजयेज्जगतां धात्रीं चण्डिकां भक्तवत्सलाम् अर्घ्यादिभिरलङ्कारैर्गन्धपुष्पैस्तदाच्यतैः धूपैः दीपैश्च नैवेद्यैर्नानाभक्ष्यसमन्वितैः रुधिराक्तेन बलिना मांसेन सूर्यानेव बलिमांसादि पूजेयं विप्रवर्ज्या मयेरिता तेषां किल सुरामांसे नक्तपूजा नृप क्वचित् प्रणामाचमनीयेन चन्दनेन सुगन्धिना सकर्पूरैश्च ताम्बूलैर्भक्तिभावसमन्वितैः वामभागे कृतो देव्याश्चिन्नशीर्षं महाशूरं पूजयेन्महिषम्भेन प्रथमं सायुज्यमीशया दक्षिणे पुरतः सिंहं समग्रं धर्ममीश्वरं वाहनं पूजये देव्या धृतं मेन चराचरं कुर्याच्च तवनं धीमा तस्य एकाग्रमानस
ततः कृताञ्जलिर्भूत्वा स्तुभितः चरितैरिमयि एकेन वा मध्यमेन नैकेनेतरयोरिय चरितार्थं तु न जपे जपन् छिद्रमुवाप्नुयात् प्रदक्षिणनमस्कारं कृत्वा मुनिकृताञ्जलि क्षमापय जगदात्रीं मुहुर्मुहुरतन्द्रित प्रतिश्लोकं च जुहूयात् पायसं तिलसर्पिजा जुहूयात् स्तोत्रमन्त्रै वा चण्डिकायै शुभम् अभि भुजो नाम पदैर्देवीं पूजयेषु समाहितः प्रयतः प्राञ्जलि प्रभुः प्रणम्यारोप्य चात्मनि शुचिरं भावये द्विजं चण्डिकां तन्मयो भवेत् एवं य पूजये भक्त्या प्रत्यहं परमेश्वरीं भुक्त्वा भोगन्यथा कामं देवी सायुज्यमाप्नुयात् यो न पूजयते नित्यं चण्डिकां भक्तवत्सलं भस्मीकृत्यस्य पुण्यानि निर्दयेत् परमेश्वरी तस्मात् पूजय भूपाल सर्वलोकमहेश्वरीं यथोक्तेन विधानेन चण्डिकां सुखमाप्स्यसि। ॐ श्रीजालपादेव्यै नमः। वैकृतिकं रहस्यं सम्पूर्णम्।